Hello everyone, welcome to IMPRINT IS. I'm Varun Khuller, and today we're looking at chapter number 4 of the economic survey. And the chapter is Undermining Markets When the Government Intervention Hurts More Than It Helps. Right? Okay. There's a quote which the chapter starts. So the quote is: Every moment one should learn, from every bit one should earn. If you waste a second, you can't get knowledge, and if you waste a bit, you can't get money. So I would say this is very apt and appropriate for any person preparing for UPSC civil services. So now I think less than 75 days are left. So definitely, if you're preparing for 2020, right, you're taking the exam. Therefore, every moment you should learn, and if you waste a second, you can't get knowledge. This is, I think, you can take this from this chapter, if nothing else. Okay, so let's start and let's look at the news first. So, what did the Hindu say? So, there's an article the next day. This is of the Economics of release. It says that the center imposition, right, to of stock limits in a bid to control the soaring prices of onion over the last few months actually increased price volatility. So it says that government intervention, actually creates a problem. So it's better if you don't intervene. And obviously, this was a hard-hitting attack against the Essential Commodities Act. It talks about the fact that the Essential Commodity Act existed in 1955. The economy was very different from what it is today. It was an economy ravaged by famine and food shortages. The mindset was very different, right? And we have, actually evidence that these interventions do not work, right? And there is a distinction between storage and hoarding, and this needs to be very clearly spelled out by the government. Okay, so what actually happens is when instead of actually, people need to store and needs to invest in, the warehouses. But what happens because of the Essential Commodity Act, the traders don't really, want to be caught in hoarding, so they never ever invest in storage. Okay, that is what the argument of the survey is in some ways. Okay, so let's that was briefly the chapter, but let's do it in detail. Let's go for the summary first. Okay, so it says government intervention, sometimes though well intended. Okay, government intervention, sometimes though well intended, often ends up undermining the ability of markets to support wealth creation and leads to outcome opposite to those intended. Okay, so what does it mean? It means sometimes, let's say हमारे parents होते हैं, so वो हमें basically उनके well intended efforts होते हैं, right? But वो undermine कर देते हैं आपकी खुद की प्रतिभा, ताकि आप खुद मूच करना भी चाहते हैं तो आपको बिजनेस खोल देते हैं. सो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, राइट? बिकॉज आप खुद नहीं कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन, आप किसी पे डिपेंडेंट है, सो आपको बेनिफिशियरी में आ दिया गया. तो बेसिकली दैट इज व्हाट this the chapter talks about, for the the Indian government as the parent and the various sectors as the area where, for example, they're given where anachronistic government intervention led to a lot of issues. The first one, so let's start with that. The first one is frequent and unpredictable imposition of blanket stock limits on commodities under the Essential Commodities Act. Okay, it says it neither brings prices down, neither reduces price volatility. So ना price कम करता है ये, ना ये प्राइस वॉलिटिलिटी कम करता है. ओके, ये है क्या? विल डू इट इन डिटेल. राइट, इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है. बी प्रिपेयर्ड आ भी चुका है ऑलरेडी एक बार. ओके, हाउएवर सच इंटरवेंशन डज इनेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर रेंट सीकिंग एंड हरासमेंट. सो ऑब्वियसली द इंस्पेक्टर राज वाला इशू ज्यादा बढ़ जाता है. सो ये कह रहे हैं कि imposition of stock limits on dal in 2006, sugar in 2009 Q1 and onions in 2019 September spiked the volatility of wholesale and retail price instead of smoothing them. But somehow people are not talking about, ये वाली बात नहीं कोई कर रहा है कि एक्चुअली ये क्यों हुआ है. सो अनियंस क्यों आए हैं? बिकॉज इलेक्शन हुए थे मई में, ठीक है ना. एंड 2009 में शुगर क्यों हुआ था? बिकॉज शरद Pawar made a killing. This time, who made a killing? The Modi bucks. Okay, the people who paid money, the traders who paid money to the BJP, they made a killing. Right, that is the basic plan. Okay, you realize there's a very pattern to this. Okay, whenever this happens. Okay. Anyhow, that's let's go ahead to spike the volatility of wholesale and retail prices instead of smoothing them. In contrast to its objectives of easing pressure on prices, around 76,000 raids under ECA were conducted under 2019. So saying इतने ज्यादा आप सोचो, इस पे इतनी कॉस्ट मैन पावर लगी,
राइट? अब लिटिगेशन बढ़ जाती है और कुछ होता है नहीं, राइट? व्हाट हैपेंस इज पीपल नेवर एक्चुअली गेट कन्विक्टेड, कन्विक्शन रेट बहुत पुअर है. बट अगेन द सेम आर्गुमेंट इज फॉर रेप, so I don't think so that's a good argument. But still, let's continue. Assuming a minimum of 5 persons involved in a raid, considerable administrative effort goes into the enforcement of the ECA. As the conviction rate, however, is absolutely low, raids have no impact on prices. The ECA only seems to be enable rent-seeking harassment, and the act is anachronistic. अभी भी famine and shortage वाली mindset के साथ चल रहा है, ठीक है ना? So ये irrelevant है और it must be jettisoned, कि अब ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? इसको बाहर फेंक दो प्लीज. That is what this chapter is talking about. Then बोलता है कि डीपीसीओ है, राइट? अब होता क्या है, डीपीसीओ आपकी प्राइस रेगुलेशन करनी थी आपने रेगुलेटेड फार्मास्यूटिकल ड्रग में, बट कोई फायदा नहीं हुआ. होता क्या है, हॉस्पिटल वाले चोर, एक नंबर के फोर्टिस, ये सब मैक्स वाले, ये क्या करते हैं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ये एक्सपेंसिव बेचते हैं सेम ड्रग को. बाहर आपको 400 रुपये मिलेगा, अंदर 1600 को मिलता है, ठीक है ना? सो कोई रीइंफोर्सिंग का कोई फायदा नहीं हुआ. इट जस्ट ड्रग्स अफोर्डेबल नहीं हुए हैं. दिस बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम, राइट? सो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर ड्रग्स, प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स को आई थिंक they need to be monitored instead of talking about this. Maybe what he's saying is fine, but my evidence says that I don't expect the private sector to play fair anyhow, especially in healthcare and education, definitely, because वहाँ पे ना it's a need. Healthcare is a need. Now, obviously, I have an incentive not to, make sure that you get the drug, because you will pay higher definitely if you don't. So पैसे अगर दवाई चाहिए तो आपको हम पैसे देने ही पड़ते हैं, ठीक है ना? बार्गेनिंग पावर नहीं है आपके पास कोई, ठीक है ना? एजुकेशन में भी सेम है, आपको पढ़ाई पर 10वीं पास करनी है, आपको 12वीं पास करनी है, आपको बीटेक चाहिए, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी. सो वो बिकॉज ऑफ इट इज लाइक दैट, बार्गेनिंग पावर कुछ नहीं है स्टूडेंट के पास. Okay, then the evidence across various commodities, pulses, sugar, onions, drugs, not just onions or sugar, where cartelization is often suspected. Episodes, different spans, there's ineffectiveness. वो बोला कि नहीं आप maybe आप बोलते हो cartelization होती है onion and sugar में, या कि शरद पवार जी थे या अभी बीजेपी वाले थे, या दाल वाला जब किया था बीजेपी वालों ने पहले, ठीक है ना? The idea is that ये ineffectiveness है. Now when I say BJP, it also means कि कांग्रेस, बाकी सब जितने भी political parties सब involved हैं इसमें, देखा जाए तो. Third, government policies in the food grain markets has led to emergence of the government as the largest procurer and holder. अब हुआ क्या इससे? बफर स्टॉक बहुत ज्यादा है एफसीआई के पास, फूड सब्सिडी बर्डन बहुत ज्यादा है, डाइवर्जेंस है बिटवीन डिमांड एंड. अब हुआ क्या है कि मार्केट चेंज हो चुका है, ठीक है ना? राइट? डिसइंसेंटिव है आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, क्योंकि एमएसपी मिलती है. मार्केट चेंज हो चुका है. एक्चुअली में आपको पल्सेस या आपको एग्स, पोल्ट्री वगैरह में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, ठीक है ना? आपको एरिया, बट एमएसपी मिलता है, इसलिए मैं करूंगा नहीं. तो अब this is something we need to think about. Either we open these markets and we start selling our grain abroad. Otherwise, I think there needs to be liberalization of agriculture market with Essential Commodities Act और ये सब. अब स्टॉक लिमिट जब इम्पोज करते हो, जैसी प्राइस राइज होता है, तो obviously agriculture is always going to be in distress because of this. Fourth, debt waiver. Okay, and lot of times Raghuram Ranjan and other economists have talked about the fact that full waiver beneficiaries जो हैं they consume less, they save less and invest less and are less productive after the waiver compared to partial beneficiaries. अब इसका दूसरा आर्गुमेंट भी हो सकता है कि अब जिसके पास फुल waiver beneficiary थे वो तो वैसे ही लुट गया था, right? So obviously he will never actually be, he would actually have a survivor's curse. Okay, he will not invest, right? Obviously. So they say that share of formal credit decreases to full beneficiaries when compared to partial beneficiaries. So debt waiver का खास फायदा नहीं होता, क्योंकि वो बंदा ना basically waiver लेके भाग जाता है. He doesn't have the capacity to invest again. So the idea is maybe इसको अगर solve करना है तो better तो ये आप ये बोलो कि full waiver जिसको भी मिलता है उसको दोबारा invest करना पड़ेगा, उसी कंडीशन पे आप full waiver दोगे, या आपको जितना भी waiver चाहिए आप लो, लेकिन आप दोबारा invest करना start करो एग्रीकल्चर में. इस टाइप का scheme has to be started by the government of India. Okay, now let's begin the chapter. That was in brief. So economic freedom and growth. So in the global indices of economic freedom, India ranks at the bottom half. Index of economic freedom है ये Heritage Foundation, इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है प्रीलिम्स में, प्लीज इसको नोट करिए, ठीक है ना? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स 2020.
राइट. ओके, एंड द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स विच इज ब्रॉट आउट बाय फ्रेजर इंस्टीट्यूट, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. मेजर इकोनॉमिक फ्रीडम एज अ freedom of choice enjoyed by individuals in acquiring and using economic goods and resources. In the index of economic freedom, India was categorized as the mostly unfree with a score of 55.2 in 2019, ranking the Indian economy 129. तो ये काफी पुअर रैंक है हमारा, ठीक है ना, बॉटम 30%. सो इंडिया फ्री नहीं है इंडेक्स ऑफ फ्रीडम में. ओके, ये क्या डिटेल्स हैं इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हमारे टेस्ट में. आप ट्राई कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में वो टेस्ट, राइट. सो डू ट्राई दैट क्वेश्चन, राइट. विल at the end of this series, after we're done with the 11 chapters, we will actually do a question bank test on these 11 chapters, so stay tuned for that as well. Okay, economic freedom enhances wealth creation by enabling efficient allocation of entrepreneurial resources and energy to productive activities, therefore promoting इकोनॉमिक डायनेमिज्म. ऑब्वियसली दैट इज ट्रू, ठीक है. इकोनॉमिक फ्रीडम होगा तो वेल्थ क्रिएशन होगा. व्हाई? बिकॉज जहां पे मैं पैसा लगाना चाहता हूँ वहां लगेगा पैसा, ठीक है ना. ये कहता है कि कोरिलेशन है between the index of economic freedom and the density of registration of new businesses, ठीक है ना. द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, द नंबर ऑफ पेटेंट्स अप्लाइड, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, राइट. इंडेक्स ऑफ इनोवेशन का डायरेक्ट. सो इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना. राइट, प्रीवियस चैप्टर में यही बात की थी, प्रो बिजनेस एटीट्यूड, राइट. तो इकोनॉमिक फ्रीडम बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसमें प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को और स्टार्टिंग बिजनेस, वो इस सब पे फोकस करना चाहिए हमें. ओके, तो अब क्वेश्चन आता है, वेयर इज देयर केस फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन. कहां पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करें? आप तो बोल रहे हैं कहीं इंटरवीन ना करें. सो वो बोल रहे हैं while there is a case for government intervention when markets do not function properly, excessive intervention when markets can do the job of enhancing citizens welfare perfectly stifles economic freedom. Government can affect either markets through, कैसे इन्फेक्ट कर सकता है? डायरेक्ट सप्लायर बन जाए, ठीक है ना, डायरेक्ट बायर अ गुड बन जाए, या इनडायरेक्ट, या रेगुलेशन, टैक्सेशन. अब आइडिया इज इंडिया में अभी तक रेगुलेशन में बहुत पुअर है, right? That is the problem, I would say. Okay, now in any government intervention of the first kind, however, affects the dynamic interaction of supply and demand in the markets, thereby determination of equilibrium prices में problem हो जाती है. Because MSP हुआ तो obviously, right, price is too high, excessive amount of product for sale, except लोगों को उतना दाल चावल आटा चाहिए ही नहीं, गेहूं अनाज उतना नहीं चाहिए जितना हम बेच रहे हैं. But price अगर low है, it causes consumers to want more of the product than the producers available. So serious welfare loss results because of not enough of the good is sold. ठीक है ना. इसे हम एक बोलते हैं डेड वेट लॉस्ट. So wasted chance है ये to create producer and consumer welfare from sales leads to dead weight loss, income loss forever. अब हो सकता था कि अब गेहूं MSP उतनी नहीं होती तो मैं क्या करता? I would have really done something else, poultry etc. But to be honest, that will not happen. It will totally hamper the food security. The farmers will just move out of agriculture and do something else. Okay. Now your argument is what they will do, whether that will be productive, whatever. But reality is, if MSP नहीं होता तो agriculture नहीं करने वाले लोग. Okay ना. So अब ये आर्ग्यूमेंट काफी वियर्ड है. ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं. सो अब होता क्या? इन एडिशन अ डेड वेट लॉस एंड आर्टिफिशियली हाई प्राइस ट्रांसफर्स प्रॉफिट्स फ्रॉम कंज्यूमर्स टू प्रोड्यूसर्स एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर रेंट सीकिंग, एंड एन आर्टिफिशियली लो प्राइस लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स एंड लो इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन फर्दर एंड एग्रीगेट्स द स्केर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट. तो ये जरूर हम कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि एमएसपी से इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही हो. बट वेदर एग्रीकल्चर जो फ्री ही नहीं है, मैं अब्रॉड में नहीं बेच सकता हूँ, और आई एम सो प्रोटेक्टेड. सो वेदर दैट वुड रियली हेल्प. आप पहले लिबरलाइज करो, उसके बाद ये बोलो तो फिर बात बनती है, ठीक है ना. आप बिना लिबरलाइजेशन की बात नहीं कर सकते. Okay, anyhow, so what is the Essential Commodities Act? 1955 में इनैक्ट हुआ था सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है ना, एसेंशियल कमोडिटीज के लिए. एक्ट इटसेल्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं करता, स्टेट कंट्रोल ऑर्डर्स करती है फॉर डीलर लाइसेंसिंग, रेगुलर स्टॉक लिमिट्स, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, रिक्वायरमेंट ऑफ कंपल्सरी परचेजेस एक्सेट्रा. यहाँ पे क्या होता है? कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, ठीक है, तो जेल भेज सकते हैं, पावर टू प्राइस लिमिट्स, ये सब कर सकते हैं. पेनल्टीज भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास लेट्स से 100 किलो बोला था आपको रखने को, उससे ज्यादा तो पेनल्टी लग सकती है आप पे.
क्या क्या आता है इसमें? पेट्रोल एंड इट्स प्रोडक्ट्स, फूड स्टफ, एडिबल ऑयल सीड्स, वनस्पति, इवन शक्कर, रॉ जूट, टेक्सटाइल्स, ड्रग्स, ऑब्वियसली दो डीपीसीओ इसके थ्रू ही ऑर्डर डालता है, फर्टिलाइजर्स, अनियन, पोटैटो, तो नोटिस दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, राइट, एंड फ्रूट, जूट सीड्स, कॉटन सीड्स एक्सेट्रा। इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है कि क्या क्या आता है इसके अंदर, राइट, अब उसमें क्या करेंगे, कॉफी एक्सेट्रा डाल देंगे, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। नाउ इम्पैक्ट क्या है? It weakens the development of agriculture value chain. It reduces producer profit. ठीक है ना? It reduces the incentive to, ऐसा हम बात की थी स्टार्टिंग में कि incentive to invest in storage खत्म कर देगा ये. Inhibits vibrant commodity derivative markets. Because obviously आप कभी भी स्टॉक लगा सकते हैं लिमिट, मैं कभी भी स्टोरेज पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं कभी अपने पास रखूंगा नहीं, तो होगा क्या, प्राइस वॉलिटिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, राइट, वॉलिटिलिटी और हो जाती है बिकॉज मैं रखूंगा नहीं, ठीक है ना, सेफ्टी के लिए, बिकॉज मुझे पता है आप आ जाओगे मुझे पकड़ने। सो होना क्या चाहिए? सो एग्रीकल्चर बेसिकली सीजनल एक्टिविटी है, राइट, ये सबसे बड़ी चीज अंडरस्टैंड करनी है। चैप्टर बोल रहा है इट इज एसेंशियल टू स्टोर प्रोड्यूस फॉर द ऑफ सीजन टू स्मूदन अवेलेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एट स्टेबल प्राइसेस थ्रू आउट द ईयर, राइट। सो इनहेरेंट ट्रेड ऑफ है बिटवीन बिल्डिंग एन इन्वेंट्री इन द हार्वेस्ट सीजन, ड्रॉइंग इन्वेंट्री इन द लीन सीजन। अब ये चीज ईसीए नहीं करने देता है, बिकॉज स्टॉक लिमिट कभी भी लग सकती है, तो आप सप्लाई चेन में इन्वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है ना। देयर नीड्स टू बी अ डिफरेंस बिटवीन पीपल होर्डिंग एंड समबडी स्टॉकिंग, राइट। अब इज अ ह्यूज डिबेट है इस पे। नाउ फर्दर दिस रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ फ्री ट्रेड, फ्लो ऑफ कम्युनिटी सप्लाई से, तो अब इससे क्या होता है, अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, डिस्करेज द एंट्री ऑफ लार्ज प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स इनटू एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और इसी से प्राइस वॉलिटिलिटी, और यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक पॉलिटिक्स आ जाती है इसमें, बिकॉज ऑब्वियसली ईसीए कभी भी लग सकता है, ऑल द एपीएमसीज हैव बिकम वेरी वेरी पॉलिटिकल। अब इसका एग्जांपल दिया गया है अनियन प्राइस राइज। सो रीसेंट एक्सपीरियंस है अनियन प्राइस राइज, 3 हार्वेस्ट सीजन होते हैं अनियन के, खरीफ अक्टूबर टू दिसंबर, लेट खरीफ जैन टू मार्च, एंड रबी मार्च टू मे। ना हुआ क्या, थोड़ा सा इशू हो गया था, हेवी रेन्स आई थी इन अगस्त सितंबर, खरीफ क्रॉप ऑफ अनियंस वर एडवर्सली इफेक्टेड, ठीक है ना। And this kharif crop usually caters to the demand during the period from October December till fresh produce from a late kharif comes to the market. So सस्टेन्ड इंक्रीज हुआ, ईसीए ने क्या किया, स्टॉक लिमिट लगा दिया, ठीक है ना। अब 20 क्विंटल कर दिया और 250 बेसिकली, राइट, कहीं जगह तो स्टॉक लिमिट से इम्पोज्ड, बट कुछ फायदा नहीं हुआ, वॉलिटिलिटी और बढ़ गई, ठीक है ना। नॉर्मली होता है कि जैसे ही स्टॉक लिमिट लगती है प्राइस और बढ़ जाएगी, राइट, रियलिटी ये है, ठीक है ना। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है सब कुछ, टू बी ऑनेस्ट, राइट, बट दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई थिंक यू कैन हैव योर ओन। एब्सेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन ईसीए ट्रेडर्स क्या करते, अपना एक पार्टनर प्रोड्यूस करते, स्मूथ अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट आता है, स्टेबल प्राइसेस। अब ये बहुत बड़ी विशफुल थिंकिंग है कि ऐसा करने वाले हैं लोग, ठीक है ना। इंक्रीज वेज बिटवीन होलसेल रिटेल प्राइसेस रीइंफोर्सेस द ईसीए, enforce the fact that ECA reduces the welfare of the consumer, and इसमें obviously बताया कि कब स्टॉक लिमिट में कैसे वॉलिटिलिटी आई है, ठीक है ना, राइट। चलो इतना डिटेल में खास आगे चल सकते हैं। सॉल्यूशंस, अब करना क्या चाहिए था, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाना चाहिए था आपको 2014 की तरह, उसको आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज लाइक अनियन, पोटैटोज एंड पल्सेस को कंट्रोल कर सकते थे, एक स्ट्रैटेजिक बफर बना सकते थे आप, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं आप, बेसिकली ईसीए को रिपील कर सकते हैं और रिप्लेस बाय मार्केट फ्रेंडली इंटरवेंशंस लाइक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स ऑफ सपोर्ट टू कंज्यूमर्स, इंसेंटिव टू इनोवेशंस, इंक्रीजिंग मार्केट इंटीग्रेशन एंड स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इस पे फोकस कर सकते हैं। Okay, now the next challenge we have is, I think, the biggest challenge we face. हुआ क्या है, ड्रग प्राइस कंट्रोल्स अंडर ईसीए। होता क्या है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ये क्या करता है, प्राइसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स विच आर एसेंशियल, ठीक है ना, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है, वो बेसिकली बोलते हैं कि ये मेडिसिन हैं जो डीपीसीओ के अंदर आएंगी, ठीक है ना। 680 शेड्यूल ड्रग्स फॉर्मुलेशन स्प्रेड अक्रॉस 27 थेरेप्यूटिक ग्रुप्स को रेगुलेट किया गया इसके थ्रू, एंड कौन इसको करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द प्राइसेस, एनपीपीए, ठीक है। नाउ सेवरल टाइम्स इसको इन्वेंट किया गया है। अब इसको एक बार हमने क्या किया था, पहले एक कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड पे होता था, ठीक है ना, इस पे थोड़ा बहुत चेंज भी किया गया है। द सीलिंग प्राइस बेसिकली इज अ मल्टीपल ऑफ द कॉस्ट रेट इसमें दिया गया था, ठीक है ना, जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस है उस पे भी फोकस था, ठीक है ना। ओके,
नाउ अब क्या हुआ है, द मल्टीपल ऑब्वियसली मैक्सिमम अलाउबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 50% फॉर फॉर्मुलेशन एंड 100% फॉर इंडिजिनस फॉर्मुलेशन, इसको कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग से अब हमने शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है ना, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग पे आ गया, एज आई वाज सेइंग कि पहले होता था अब नहीं है, ठीक है ना, मैक्सिमम कैपिंग होगी है इसकी, ठीक है ना, 16% फॉर फॉर्मुलेशन स्पेसिफाइड इन द एनईएलएम, राइट। सो मैक्सिमम मार्कअप है कि आप रेफरेंस प्राइस से कितना ऊपर ले सकते हैं, राइट, ये प्रॉब्लम है ऑल टुगेदर। सो डीपीसीओ, अब प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे ही आप कोई ड्रग उसके अंदर आता है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है ना, 75 1 पर एमएमजी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट बढ़ जाएगी, ठीक है ना, हॉस्पिटल के अंदर तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सो डीपीसीओ के चीपर फॉर्मुलेशन में भी 21% इंक्रीज है इन दिस ऑर्डर, ठीक है। DP also order appears to have increased the price of drugs mostly sold through hospitals but decreased mildly in the case sold to retail chemists. So problem क्या है, हॉस्पिटल चोर है इंडिया के, क्यों चोर है, ठीक है, बिकॉज पॉलिटिशियंस की हॉस्पिटल्स है, ठीक है, पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों के ये चीजें हैं, सो वो बेसिकली ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, या इंडिया के डॉक्टर चोर हो गए हैं एंड दैट्स व्हाई वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स इज इंक्रीजिंग, मे बी लाइक दैट, माइट से दैट, बट ऑब्वियसली जनरलाइजेशंस आर वेरी बैड, right? Right. Try to understand that. फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन ग्रेन मार्केट। गवर्नमेंट हैज सॉट टू अचीव फूड सिक्योरिटी बाय इंश्योरिंग रेगुलेटेड प्राइसेस एंड सेफ गार्डिंग। तो हम क्या करते हैं, पीडीएस करते थे, ठीक है ना, आप कंट्रोल करते हैं इनपुट प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सेट्स आउटपुट प्राइसेस, अंडरटेक स्टोरेज एंड प्रोक्योरमेंट, ठीक है ना, पीडीएस के थ्रू। गवर्नमेंट ही सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, होल्डर ऑफ फूड ग्रेन्स है, राइट, गवर्नमेंट प्रोक्योर्स 40 to 50%, तो ऑटोमेटिकली प्राइस सेटर बन चुका है एंड डोमिनेंट बायर है, ठीक है ना, गवर्नमेंट ग्रेन्स का। एफसीआई के थ्रू करता है, अब कैसे करता है गवर्नमेंट, the grains procurement, FCI 1965 में सेटअप हुआ था, अगेन यू नीड टू रिमेंबर दिस कैन कम इन प्रीलिम्स, राइट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एट एमएसपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू पीडीएस, वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे अफोर्डेबल प्राइसेस पे, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर फूड सिक्योरिटी एंड प्राइस स्टेबिलिटी। सो ये हमारा फोकस है। ऑब्वियसली एफसीआई इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, फूड करप्शन ऑफ इंडिया, मे बी यू कैन से दैट। Now, accounting for the fact that economic cost to FCI for acquiring storage distribution gains is 40% of the total procurement cost, these policies have basically a lot of problem, ठीक है ना। Sometimes people say maybe it's not good FCI exists, okay, it's better if there's active players like private players and government equal player है, but obviously it is too strong, ठीक है ना। और अगर कंपटीशन होगा तो एफिशिएंसी आएगी ऑपरेशंस में, डेवलपमेंट ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग। सो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात हो रही, लेट्स सी वेदर वी कैन डू इट, बट काफी अच्छा आइडिया है। पीडीएस के लिए क्या सॉल्यूशंस है, so the growth in public investment in agriculture negatively correlates है with food subsidy outlay। अब जितनी food subsidy आएंगी, growth public investment कम हो जाएगी। As investment are crucial to increase productivity, increase आना चाहिए subsidy, focus on subsidies harming the growth of agriculture sector। तो subsidy और investment के बीच में focus होना चाहिए कि आप invest ज्यादा करें, subsidy कम दें, ठीक है ना। फिर declining share है of consumer expenditure in cereals, ठीक है ना, वीट एंड प्रोडक्शन का न्यू रिकॉर्ड चल रहा है, तो या तो आप एक्सपोर्ट करना अलाउ करिए या आप चेंज करवाइए, ठीक है ना, एमएसपी बंद करिए। सो दैट इज व्हाट दिस सेइंग। तो फार्मर्स आर डिराइविंग द सिग्नल्स फ्रॉम द डिमांड, नॉट फ्रॉम द डिमांड पैटर्न्स बट फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ प्रोक्योरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स। सो इससे डिस्कनेक्ट आ गया बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अब लेकिन आप सडनली चेंज करें तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो देयर इज अ ह्यूज डिबेट दैट हाउ यू actually make sure that diversification happens. So some kind of incentive has to be given for other producers also, not just wheat and rice. So paradigm shift है, ठीक है ना। अब द आइडिया सेम वे, जैसे तब उस जमाने में जब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया था, तब obviously स्टोरेज की देयर वाज स्टॉक होल्डिंग एटसेट्रा, राइट, ब्लैक काला बाजारी बहुत थी। वैसे ही एफसीआई जब क्रिएट हुआ था, अब में बहुत डिफरेंस है। इंडिया पहले उस जमाने में फूड स्केर्स इंडस्ट्री कंट्री था, अब फूड सरप्लस है, तो अब हम नेट एक्सपोर्टर हैं सीरियल्स के। सो ऑब्वियसली अशोर्ड प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन गेव राइट इंसेंटिव्स एट दैट टाइम, बट अब इनएफिशिएंसी बन गई है इसकी वजह से, एंड अब इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा हमें डाइवर्सिफिकेशन एंड environmentally sustainable production. Okay, so this kind of tells you that how share of cereals in
consumer expenditure, urban is reducing. This is how suddenly, look at the graph, consumption is declining both in rural and urban area, right? Okay, परसेंटेज वाइज है ये. Okay, अब 5 से 10 के बीच में है, right? For urban, and for rural it's little more than 10. So that is case. But look at the kind of production that we are doing. It's increasing. Okay, and to be honest, it can be increased further. Okay, and it will get increased further. So we need to diversify very quickly. So आप कैसे कर सकते हो? So आप एक काम करिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सब्सिडी कैश ट्रांसफर दीजिए, क्रॉप न्यूट्रल दे दीजिए आप, ठीक है ना? आप एमएसपी देना बंद करिए, आप वैसे ही पैसे दीजिए जितना देना चाहते हैं. अब ऑब्वियसली डब्ल्यूटीओ का इशू अलग आएगा. एनएफएसए को रिस्ट्रिक्ट करिए, बॉटम 20% को issue prices for others should be linked to procurement prices. Now huge debate, election हरवाओगे ऐसा लग रहा है मुझे देख के. Okay, a better alternate would giving income transfers to consumers through direct benefit transfers. फिर conditional cash transfer करिए, आप nudge करिए लोगों को towards improved health and education level. Food insecurity and poverty एक बहुत बड़ा debate है कि लगता है कि इंडिया अमीर हो गया, but actually में ऐसा नहीं है, ठीक है ना? So अब ये whether last mile वाला coverage होगा कि नहीं होगा, huge issue, right? Therefore, the food grain policy needs to be dynamic and allowing switching from physical handling and distribution to cash transfers. Food coupons sector पे focus है. अब ये actually chicken egg problem है. पहले you realize that आपने जब ये सब infrastructure बनाया था, आपको पता था कि cash transfer enough नहीं है. अब आप cash transfer भी जाने because you think कि market strong enough है, but हमारी market इतनी सही नहीं है. To be honest, it is not that ethical, ठीक है ना? And making the poor who have such low bargaining power dependent on the market, it's very dangerous. Okay, so let's continue. At the macro level, agriculture, marketing, trade, and distribution policy need to be aligned that farmers receive correct signals for diversification into remunerative and sustainable production. ये एग्जाम्पल है इसी सेम चीज के. ब्राजील में बोसाला फैमिलिया है, मेक्सिको में अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है ना? इस पे ऑब्वियसली ये was the same thing. The cash transfer, conditional cash transfer schemes हैं, right? इसका एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए. ऐसे में भी आप लिख सकते हैं, and you can also talk about this in your prelims. I think prelim में क्वेश्चन आ सकता है. हमने हमारी टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन है इस पे, ठीक है ना? फिलीपींस का भी कैश ट्रांसफर वाले के बारे में है इस पे. फिर फाइनली डेट वेवर. अब होता क्या है, डेट रिलेवर बहुत कॉमन हो चुका है. पहले होता था कि डेट वेवर नहीं होगा, अब तो ऐसा है कि इलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमेशा डेट वेवर लिखा है. सो कहाँ कहाँ हुआ है? आंध्रा में हुआ है, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, एमपी, कई बोल लो डेट वेवर होगा. तो अब 2008 के बाद ये एक क्रोनिक डिजीज है इंडिया में अब, ठीक है ना? सो डेट रिलीफ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? लेट्स ट्राई टू लुक इनटू दैट. सो 2008 में क्या हुआ था? So agriculture investment productivity increase नहीं हुआ. So this is the first problem. कि neither agriculture investment nor productivity increase after the waiver. But you expect productivity increase, which is hugely not possible. ठीक है ना? Consequently consumption भी खास नहीं आया. 2% का आपने GDP का waiver दिया, but किसी को फायदा नहीं हुआ. तो होता क्या था? Only the rich gets it. So that is what Raghuram Rajan also talk about. Loan performance of genuinely distressed borrowers improved by 9% due to loan waiver, but non-distressed beneficiary का deterioration हो गया, ठीक है ना? तो जिसको चाहिए था उसको तो थोड़ा बहुत फायदा हुआ, बट जिसको नहीं चाहिए था तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी. सो आर्ग्यूइंग दैट द बेनिफिट्स ऑफ डेट वेवर ऑन फार्मर्स प्रोबेनेंस पोस्टुलेट दैट बोरोअर्स सफर फ्रॉम डेबिट हो रहा है. इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डेट ओवरहैंग क्या होता है. ये कहते हैं कि in a situation where all current income get used up in repaying the accumulated debt, leaving little incentive to invest further in physical or human capital. And such borrowers are unlikely to receive new funding in debt or equity because अब आगे कैसे लोन देंगे, तो मिलता ही नहीं था, ठीक है ना? So this leads to abandonment of beneficial investment and hence reduces social welfare. But I think PM Kisan is a good scheme because आप actually lower level पे 2,000 rupees दे रहे हैं, and this can be used as an EMI. Overall 6,000 obviously. इसी को EMI बना सकते हो आप, ठीक है ना? Okay. Debt waivers obviously impact the credit markets negatively. Debt relief obviously exceptional circumstances में दिया जाए, unanticipated हो तो ही फायदा है. अभी मुझे पता है कि आप देने वाले हो तो मैं obviously लोन देता ही नहीं हूँ. तो ये
टोटल क्रेडिट कल्चर खत्म कर रहा है ऑल टुगेदर. Waiver leads to loan defaults on future loans, no improvement in wages, productivity or consumption. ठीक है ना. अब इसका एग्जाम्पल है 2010 में गवर्नमेंट ऑफ आंध्र ने क्या किया. अब काफी माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स ने लोन रिकवरी प्रैक्टिसेस काफी उनकी क्रूअल थी. सो उनने अब लोन डेलिक्वेंसी रेट बहुत उठ के जैसे इंटरवेन किया, अब उस पर इम्पैक्ट हो गया. सो द रेट ऑफ डिफॉल्ट्स एंड द रेट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑन बैंक increased by 12.4 to 24% respectively after the intervention. और उससे क्या हुआ, आगे लोन देना लोगों ने बंद कर दिया. So government intervention that intended to help microfinance borrowers ended up hurting them and depriving them of credit. Right? So that tells you कि only the land of the India has become a land of the mighty. So जो obviously microfinance borrow giver है वो नहीं देता है पैसा. ठीक है ना. बोरोवर भी नहीं दे रहा और जो दे सकता था वो भी नहीं दे रहा. क्यों नहीं दे रहा? बिकॉज उसको लगता है आप पैसे वापस नहीं करोगे. और आपको क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपको लगता है कि सरकार दे देगी. ठीक है ना. राइट, दैट्स द आइडिया. What are the other examples of this? Capital control issues हैं. ठीक है ना. How much capital you could raise? This was in 1947. ये सभी से change हो गया है. फिर ONGC Act था. ठीक है ना. Government monopoly थी, but obviously that also has changed. Then Banking Companies Acquisition Act है, उसको भी change किया गया. अब तो mergers भी हो गया है. ठीक है ना. पहले nationalized bank से 27, अब तो 12 कर दिया हमने merger. Right? Private and public player काफी strongly हमने equal level playing field लिया है उनके लिए. So अब reality क्या है? Let's say what markets can do. Markets normally prices को check पे रख सकते हैं. Highly dependent country, कभी ऐसा हुआ नहीं है. Use resources efficiently. Encourage innovation, definitely this they can do. Encourage consumer choice, create wealth and maximize aggregate. Public good नहीं रह सकते. So try to understand. Education, healthcare में market का कोई काम नहीं है. ठीक है ना. ये public good है. तो अब this is a huge problem. प्रिवेंट अब्यूज ऑफ मोनोपोलिस्टिक पावर, ऐसा कुछ नहीं करने वाला वो. इंटरनलाइज एक्सटर्नलिटी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाला वो. आपको खुद ही पैसा देना पड़ेगा. ओवरकम इंफॉर्मेशन ओवर सिमेट्री, डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ इक्विटेबली. अब इंफॉर्मेशन एसिमेट्री आपको नहीं बताएगा कहाँ पे सस्ता मिल रहा है मार्केट. एथिकल प्रैक्टिसेस इंश्योर नहीं करेगा. ठीक है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके ना. डिस्पाइट द फैक्ट ये चार्ट बना है, इन्होंने इतनी बात नहीं की है. Conclusion. So, competitive markets are effective in allocating resources in economy. However, the ideal of a completely efficient market is rare. The cost of government intervention may outweigh the benefits when market failure term, right, जब होना start हो जाए. So, government को intervene करना है when market failure is acute. So, example is Yes Bank. Okay, recently interventions that were happening in a different economic setting, possibly because the economic failures were obviously market failures where may have lost relevance in a transformed economy where market failures are not severe. So eliminating such instances of needless government intervention enable competitive markets and thereby spur investment and economic growth. Right, and this is the summary. Right, the idea again, just to revise. ECA, DPCO, right? All of them actually have worked against the people of India, right? They have reduced public welfare, and that is what this chapter, in simple terms, is saying. Okay, it is talking about the same way about the food grain, the PDA system, the FCI. It is talking in the same way and especially the farm loan waiver. This has become an epidemic, definitely. So in that, I'm totally for him, right? I am totally against the DPUC order, right? And obviously in education as well, right? Look at what Arvind Kejriwal has done in education in Delhi. And they have actually maintained the education fee level in Delhi for the last few years at least. Thank you so much for listening, right? Do subscribe, like, comment on the channel, right? If you like a video, do leave a comment. If you want the PDF, you can obviously click on the link given in the description, or you can come to our Telegram group, right? Thank you so much. Right?